Hi everyone, good morning to all of you. It is such a pleasure to connect to all of you every day in the morning in the Daily Transform at 10 a.m. I'm Dr. Sumer. I have with me Dr. Deepti. And today we'll be very crisp, very brief, and only talk about one thing. And that one thing is on our next, all the FMG aspirants, NEET PG aspirants, we are all like Yeah. looking forward to the result, but also anxious about the outcome. What do you say, Dr. Deepti? Okay. Absolutely, yes. It's yet another tough phase, and I totally agree on it. But I want to ask, how many of you feel that would sir and ma'am be anxious about the results? Let me know in the chat box. What is your thought about? Are sir and ma'am anxious about the result? Are they also waiting for it, or are they really indifferent? So, what do you think? I want to know before we start off. ऐसा लग रहा है And कुछ बाकी है, कुछ करना बाकी है. नहीं It's नहीं like रुको 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 because it has to be that we have to know that we are in the same phase or not. Yes. To do you know how anxious we can also get? Yes. I'll just give you a little example. Every day in the morning when I drop off my son for school, I call up my parents. In fact, they call us up just to say, a hello to my son. And my mom called and she says, आज तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है ना, ऑल द बेस्ट, मैंने पूजा कर ली है, बहुत अच्छा आएगा. Now, do you understand the level of anxiety? It's trickling over to my parents as well, right? So, yes, this is to tell you that we are in the same boat, we are on the same page, we feel the same emotions. Your result comes once, ours come with every student's results, right? And so when we say this today, we really mean it. That are we going to handle, how do we handle the anxiety that we have? Yes? and also, when we say result, from our side, we just don't mean that, you getting a top rank, one, two, three. For us, the most important thing is if we are able to help you to reach to the place where you want to reach, you know, and, success would have different definitions for different people and different circumstances. And Yes. I always believe that we celebrate each of your journeys. You have been standing despite the odds, and even that is a big victory. Stop, thinking of an outcome or a result to define you. And that was the purpose of today's transform. We wanted to tell you that whatever may be the outcome, and wish that more faculty members and more people should come out and tell the children that whatever may be the outcome, we will continue to love you the same. Okay, whatever may be the outcome, our relationship of student and teacher is not defined by any outcome. So keep this in mind, beta, keep this in mind. And Yes. same holds true for your parents as well. Don't let the outcome define your self-worth. You are precious as it is. Keep in mind and write it in the comment box that I am precious. You are already precious irrespective of the result. And this year, I am wanting to do something very different, and I'll remind you later on also. After the results, if you feel that you have a story to share with the students, irrespective of the rank, I will take your interview. I'll sit with you whole day, even if it means whole night. I'll sit with the students and share your stories. So ये मतलब मुझे लगता है कि एक गलत दिशा है कि हम सिर्फ बोले ये वन वाला महान है, टू वाला महान है. आई डोंट एग्री. आप सब प्रेशियस हैं. ईच वन ऑफ यू इज अमेजिंग. आपने इतनी मेहनत की, यहाँ तक पहुंचे हो, खूबसूरत है. आपकी हर एक की कहानी जरूरी है. सो इट इज लाइक डोंट लेट एनी आउटकम define your self-worth. And it is very essential that we all are going through the same emotions. But ज़्यादा problem कब है? When we tell ourselves, or rather we don't tell ourselves, either which ways. Sometimes we are seeing the result as a danger. Yes, do you agree? So you have to tell your body, your system, your mind that this is just anxiety that I'm going through. It's not really a danger. Do you understand this?
we go into extreme emotions when we pursue something as a danger. I'm sure you all are medicos and you know how the body responds when it feels that it is in danger. It goes into the fight flight mode, right? So you have to tell your body, your mind, that this is not something what is dangerous. It is just anxiety, and I have to learn to calm myself. And you have to tell yourself that no matter what, you gave your best, right? So whatever it is, we will see, and we will take the best step forward, right? So I see a query by Anuj ke sir. Please guide about NEET PG 26. Anuj, please see yesterday's episode 102 transform session. Full 1 hour we have given to NEET PG 2026. Please listen to that. It will be a game changer for you. And just to let everyone know, because I'm sure we'll have mixed comments, if you go to the homepage of DAMS Alpha app, you scroll down to news and article section. In the article section, we have published the strategies that me and Dr. Sameer have discussed for both November INI-CT 2025 and May INI-CT 2026, and June, most likely that's when NEET PG 2026 is going to happen. So we have put down or published those strategies in the article section of DAMS Alpha app. It stays there. So if you have missed out, I would recommend that please go through that and plan your study accordingly. Okay. And also, we have big plans for you as well. Like, not only we will celebrate your victory, and this time we will, after the result, me and Dr. Deepti will come on the channel and tell you that we'll celebrate every journey. So, if you want to share your journey, if you want to share 2 words, we will make sure that we give you the voice. ये बहुत हो गया कि केवल 1 2 3 की बात सर सुनते हैं, सर सबकी बात सुनेंगे. मेरे को And I love all my students. And second thing that we have done is now we want to make sure even further that you don't need to go anywhere other than the app. So, your daily transform is already there on the app, and Dr. DP has taken a big plunge by introducing the article section on the app itself. So, what is going to happen now is that anything that we want to tell you, like this is a strategy for May INI CT NEET PG 20, June 2026. So, we have put it in an article form, summarized it, and it is there on the app for you. Or you can see another article in the app. I'll just bring it for you, where we want to make sure that for many of you will not be giving 2026 NEET PG, I know. So for your juniors, you will see that there is a clean crisp article that we have given you in the app itself. Very simple interface. And we believe now, other than DAMS, everybody else is now just a content library. तो उनका कोई भी mechanism of talking to students नहीं है. They are just content libraries. उनसे बेहतर content library YouTube है. Okay, DAMS का YouTube channel is going to be even bigger than the most popular apps that you people keep subscribing. उससे ज़्यादा आपको YouTube channel पे content हम देंगे. ये हमारा promise है पूरे साल में. okay, so now, as we know, we are expecting results of both FMG exam as well as NEET PG exam, right? No matter which exam you have given, it is important for you. We are not labeling anyone here. FMG बच्चों के लिए उनका result बहुत important है. NEET PG के लिए उनका result बहुत important है. Please do not fight amongst each other, right? These are two different exams for a different purpose, right? And there is no need to prove anything to anybody. People on X are going to instigate you, because that is how the algorithm goes. You instigate, you reply, another replies, you get views. Just get out of it. Okay? So don't get instigated. हर बच्चे के लिए उसकी जर्नी इंपॉर्टेंट है, no matter what you are doing or appearing for. ठीक है, पहली बात ये. So there are no comparisons. दोनों एक अलग पर्पस के एग्जाम्स हैं. They are solving different purpose. ठीक है. So this is what you need to understand. दूसरी चीज, we need to tell ourselves that कब रिजल्ट आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, right? And what we can do best is, first, let us try and control the physical behavior that we have because of anxiety, and then we will take care of the emotional behavior as well, right? So my top advice is to most of you
Number one, please limit your caffeine and sugar. They are both going to give you a huge kick, which you don't need right now. Okay, so there is no need. You don't have to stay awake. You don't have to do something very active. So limit. I'm not saying make it zero. Okay, but limit your caffeine and sugar intake. They are very very strong anxiety inducers. Second, this is the time you catch up on sleep. ठीक है, क्योंकि हो सकता है रिजल्ट के बाद फिर स्लीपलेस नाइट्स हों फॉर वेरियस रीजंस, किसी की खुशी से, किसी की उतनी ना खुशी से, किसी की फिर एंजाइटी से कि मुझे ये रैंक पे ये मिलेगा या वो नहीं मिलेगा. So you know it is immaterial of what rank you get. Everybody has post result anxiety. ठीक है, सो मिड रैंकर्स की अलग एंजाइटी है, टेल वालों की अलग है, आगे वालों की अलग है. सो नो कंपैरिजन. सो इसीलिए दिस इज ऑल्सो द टाइम यू कैच अप ऑन योर स्लीप. ओके, take the so called beauty sleep. Okay, and it's not just for girls, boys you can also take the beauty sleep, right? So दो चीजें ये बहुत essential हैं. तीसरा, बिफोर वी गो टू द इमोशनल एस्पेक्ट्स एंड हाउ टू और व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू, तीसरी चीज, व्हेन यू फील रियली एंग्शियस and you're not able to control it, please go out for a walk. Okay, go for a brisk walk. It helps to cut the silence. And the moment I say that it helps to cut the silence, I cannot, what I can recall is a reel that Dr. Sameer has shared, which he shouldn't have, about cutting the noise. And where he was giving me, you know, targets, do this, let's do that, let's do this, and I was busy studying. Dr. Samir, somebody was even making that. You didn't even tell me somebody was capturing that. Even I didn't know, and I saw that reel in the Dan, dump. So it somebody was from our interesting. office has done this. We need to catch hold of the people. But Dr. Deepti, you have not accepted the collab of that reel I so just far. now did. I never even knew it was on Instagram. Why did you do that to me? Okay, anyways. Okay, Okay. so yes, And go also, out for a walk, cut the noise. okay, and also, this is the time not to speculate. डू नॉट स्पेकुलेट कि मेरे कितने ठीक हुए हैं, कितने Yes, खराब हुए हैं, जो होना था हो चुका है. लेट अस सी द रिजल्ट. अभी मत कैलकुलेट करो, अभी मत स्पेकुलेट करो. पीपल आर यूजिंग योर स्पेकुलेशंस टू गेट एंगेजमेंट. वो yeah, बार बार कुछ ना कुछ पोस्ट डाल रहे हैं, इतने नंबर वाले की इतने आएगी, इतने. उसको क्या पता है यार, पेपर जब जो गवर्नमेंट बताएगी वही रिजल्ट आएगा भाई. So do not speculate, do not right now torment yourself with speculations. Imaginary fears are always more painful than the real event. Don't speculate right now. And also, all I want you to do right now is all of you will say best of luck to each other. Many of you are, have appeared for NEET PG. Many of you have appeared for FMGE exam. अभी तुम सब एक दूसरे को best of luck कहोगे. Okay? Can you do that? So, from our side, our blessings and best wishes are to all the children there. जितने भी बच्चे हमें सुन रहे हैं, हमारी best wishes आपके साथ हैं. Just keep in mind, one exam result does not define your self-worth, and you are, valuable and precious as it is. very nice. That's very essential. That feeling has to be there that we are all in it. No doubt, sometimes we know we are competing with each other as well, but it has to be a healthy competition. It has to be something that brings out the best in us, right? Okay. Now, whatever the result is going to be, okay, you may be satisfied with it, you may not be satisfied with it. Either which ways, whatever it turns out to be, as Dr. Sumer said, you don't have to take it as a judgment on your future abilities or capabilities, or on how nice a doctor you can be or you cannot be. ठीक है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज नॉट अ फ्यूचर जजमेंट वेदर यू विल बी सक्सेसफुल और नॉट. ठीक है, बहुत सारे टॉप रैंकर्स भी ऐसे होते हैं जो आगे जाके वो नहीं कर पाते जो उनको कर पाना था, डिस्पाइट हैविंग अ ब्रांच ऑफ देयर चॉइस. बहुत सारे मिडिल रैंकर्स भी ऐसे हो सकते हैं जो अपनी ब्रांच में घुस कर उसमें और इंटेंसिव स्किल्स हासिल कर कर बहुत बड़े हो जाएं. ठीक है, so no rank is a judgment on your future abilities or capabilities. So which means you are just going to take it in its stride. ठीक, and acceptance is the key. The sooner we accept, more likely is that we will be more in terms with it,
and we will take practical decisions, not emotional decisions. Dr. Sumer? And totally, this is the time where you will not look at the, speculate on the outcomes. You will detach yourself from the outcome, let the outcome come. You will absorb it. You will try to understand what are my options after that, and then we will make an intelligent decision. And Yes. how will you make this intelligent decision is that we will conduct a mega career counseling in Delhi, where we will invite you all by, we'll open the registration on the app itself so that, we And can have here a count comes of head count. another And task by Dr. Sumer. but we have to be with children, so we'll do a mega career counseling, and after Yeah. that we will open up the app for individual career counselings with the faculty. It will be India's first such initiative where you can book directly with the teachers and talk about your career choices. No one has done it before, and most of the time you meet counselors who are actually not specialists in their own field. So Yes. we will be doing it for you, and so we'll do a physical counseling, a YouTube session, and if you want to talk individually, we'll do that as well. So Yeah, we maybe are, we can keep some one-on-one sessions as well, if possible. yes, yes, and we are always on the idea that how can we help you make a good decision. And I only thing I will tell you today is sometimes you get a gray outcome, and this is Yeah. something that I want you to understand today as adults, that हम लोग चाहते हैं या तो ब्लैक रिजल्ट आए या वाइट आए, कि या तो मेरा एडमिशन हो जाए मेरी चॉइस ऑफ ब्रांच मेरे बेस्ट कॉलेज में वहां पे, या फिर ना हो, सो दैट आई गिव माई नेक्स्ट अटेम्प्ट. बट एक्चुअल लाइफ गिव्स अस अ ग्रे रिजल्ट, and how you decide further on a gray result makes you what you become in life. मतलब हमें लगता है हमेशा कि ब्लैक एंड व्हाइट देगा भगवान, हमेशा एक क्रिप्टिक भाषा में जवाब दे देता है कि अब तू बता क्या करेगा. You understand? So how you make it big after a gray result? How do you decide that okay, I will join this branch or I'll appear for the November exam? How do you do? What do you do after that? Makes you what you will become. And most people they get a gray answer. जिंदगी में And ना काला सफेद मिलता नहीं है. हमें हमें चाहिए ये कि सही या गलत हो, लेकिन होता नहीं है. हमें एक्चुअली में बीच का आंसर मिलता है, एंड दैट इज वेयर योर leap of faith, your abilities to think in a blurred picture makes you the man that you will become, or the woman that you will become. we will talk about all these things post result as well. As Dr. Sumer said, we'll keep a counseling session. But one thing is for sure, and I'm sure Dr. Sumer will add his wise words to it, and that is any decision that is taken out of fear. आप मेरी बात समझ रहे हो? कोई भी हो, मुझे नहीं पता वो क्या डिसीजन है, बट इफ अ डिसीजन इज टेकन आउट ऑफ फियर, then usually it is not a path of growth or happiness. ठीक है, सही गलत मैं नहीं बोल रही हूँ. ठीक, आपके लिए सही हो सकता है, मेरे लिए गलत हो सकता है, मेरे लिए सही हो सकता है, आपके लिए गलत हो सकता है. मैं ये बोल रही हूँ कि जब हम डिसीजंस डर की वजह से लेते हैं, तो दे डोंट लीड अस टू ग्रोथ, नीदर डू दे लीड अस टू हैप्पीनेस. राइट? जो भी आप डिसीजन लो, यू हैव टू टेक इट फॉर द राइट रीजंस. मैं हमेशा ये बोलती हूँ, देयर हैज टू बी अ राइट व्हाई. फियर शुड नॉट बी अ डिसीजन मेकर. ओके, डॉक्टर समीर, आप बच्चों को कुछ बताना चाहोगे? I totally agree कि अपने डर को अपना कमांड मत दे भाई, अपने सपनों को दे. So when you are making decisions for dreams, and that means you are wanting to more out of life, तो आप ज्यादा एग्रेसिव डिसीजन लोगे और आप ज्यादा बेट खेलोगे अपने ऊपर. जब आप डर के खेलोगे तो यू विल ट्राई टू सेव गार्ड व्हाट यू हैव ऑलरेडी अर्नड. इट इज जस्ट लाइक गैम्बलिंग. मुझे कैसा लगता है कि लाइफ एक गैम्बलिंग की तरह होती है, दैट यू वन समथिंग. अभी बिगनर्स लक था और हम कुछ जीत गए. अब लगता है कि ये दाव पे लगाऊं और खेलूं, या वापस जितना मिल गया उतने को बटोर के. लाइक केबीसी के यहाँ तक जीत के आगे बढ़ना चाहते हो, आगे खेलना चाहते हो, कि जो मिल गया उसको लेके सेटिस्फाई होकर एग्जिट होना चाहते हो. दैट इज हाउ यू डिसाइड. हाउ यू डिसाइड शुड बी ट्रू टू योर पर्सनैलिटी एंड योर एस्पिरेशन. दोनों बातें याद एंड करना. आप जो भी डिसीजन लो, इन दो बातों को सही होना चाहिए. आपकी पर्सनैलिटी क्या है और आपकी एस्पिरेशन क्या है. सपोज मेरी पर्सनैलिटी लेजी है, ठीक है, लेकिन चाहिए मुझे फेरारी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बायोकेमिस्ट्री ले लेता हूँ या मैं एनाटॉमी ले, तो वो बनेगी नहीं बात. इट इज नॉट लाइक मैं लेजीनेस के कारण डिसीजन ले ले. पर्सनैलिटी एस्पिरेशन दोनों को मैच करना है, दोनों को मैच करना है बेटा. सो इफ आई मैच
माई एस्पिरेशंस, मेरी एस्पिरेशंस कुछ भी नहीं है, तो फिर ठीक है, उस तरह से सोच। मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मुझे क्या, दोनों को सच अगर मैं बना दूंगा, यू विल बी वेरी हैप्पी इन योर लाइफ। दैट इज व्हाट रियली मैटर्स। फॉर सिंपल थिंग्स लाइक आपको सर्जरी बहुत पसंद है, लेट्स से यू ऑलवेज सीन योर सेल्फ यू नो एज द नाइट इन शाइनिंग आर्मर, राइट? सो लेकिन आपको किसी ने बोल दिया भाई सर्जरी में तो बड़ी टॉक्सिसिटी होती है, सर्जरी तो लेनी ही नहीं चाहिए, सर्जरी तो करनी ही नहीं चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज उसके फियर। लिए सच हो सकता है ना, तेरे लिए तो तेरा सपना है। क्यों वो कंफ्यूज हो उसका रहा डिफेंस मैकेनिज्म भी हो सकता है। पीपल आर जस्टिफाइंग देयर डिसीजंस एंड दे आर इम्पोजिंग ऑन यू। So you have to be very careful. Whom do you listen to, right? What are you absorbing from it? And are they impacting your decision making or not? You have to be very, very careful because this decision that you will take now is going to stay with you for life. बार बार मौका नहीं आता है, ठीक है? सो इसीलिए डिसीजन लेना, किसी ने लिखा भी है एग्जाम देना आसान था, काउंसलिंग को गो थ्रू करना शायद और भी मुश्किल होगा, विच इज फेयर बिकॉज यू नो इट इज अ डिसीजन दैट स्टिक्स टू यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इसीलिए जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि डर के माध्यम से डिसीजन मत लीजिए। जैसे कोई बोल रहा है कि ओबीजी बाई से मुझे सब डर आते हैं, तो क्या हो गया? सब डर आते हैं इज नॉट द रीजन वाई वी विल टेक इट और वी विल नॉट टेक इट। वी विल टेक इट बिकॉज वी लाइक द ब्रांच, we will take it because it is an evergreen branch, we will take it because it's a beautiful combination of medicine and surgery, we will take it because we want to pursue। देखो उससे क्या होता है, आप जब डिसीजंस अपने पैशन से डायरेक्ट करके लेते हो तो इट इज मच इजी टू गो थ्रू हर्डल्स, और हर्डल्स तो आती ही आती हैं, ठीक है? लाइफ है। सो ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी ब्रांच में भी हर्डल नहीं होती है, हर ब्रांच में उसकी हर्डल्स होती हैं सूनर और लेटर, ठीक है? सो हर्डल्स तो सब में होंगी, मगर विल यू बी एबल टू क्रॉस दोस हर्डल्स और नॉट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पैशन फॉर इट, बिकॉज इफ यू आर पैशनेट यू आर मोर लाइकली टू परसिस्ट। If you're not passionate, everything looks like a hurdle, you're more likely to quit. Okay? And I see somebody saying, sir, I am not a good decision maker। मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ, the only bad decision that you can make in your life is not making a decision। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, and this is very important for all of you to understand। वो कहते हैं कि सर मेरे ना मम्मी ये कह रही हैं, पापा ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तू क्या कह रहा है? सर मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। सो फिर यू बीइंग अ कावर्ड, यू नीड टू टेल व्हाट इज इन योर हार्ट। तेरे दिल में क्या बोलना पड़ेगा भाई, नहीं बोलेगा तो कैसे बनेगी बात। सो वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इज बाय नॉट टेकिंग अ डिसीजन। समझ पा रहे? डिसीजन जो भी लेगा यार, जिंदगी में सही गलत कुछ नहीं होता, लॉन्ग टर्म में देखी जाएगी क्या होगा, लेकिन तो अपने मन का तो करेगा। अपने मन का तो कर रहा है ना, कि तेरे मन का ये तूने कर लिया ना, दैट्स ओके यार, ठीक है, गलत है तो गलत है, अपने कर लिया, दुनिया जो मर्जी कहते रहे। यू अंडरस्टैंड? दुनिया कह रही है, एक बच्ची कह रही है यहाँ पे कि सर लोग कह रहे हैं लड़की सर्जरी नहीं करती, उन लोगों को छोड़ना, तेरा मन है ना, कर लेते हैं, ठीक है? यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? सो लॉन्ग टर्म दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मैटर, दैट यू डिड थिंग्स योर वे। डोंट बी अ कावर्ड, Okay. डोंट हाइड बिहाइंड दिस थॉट प्रोसेस के So पापा कह let's रहे हैं, let's मम्मी कह रही है, कोई कुछ नहीं कह रहा, तो ये let's answer this इनसिक्योरिटी query होता also, है। Dr. Sumit. Somebody is saying, what if passion and natural abilities are not congruent? Now, this is something which I do not really approve of. I'm not being critical, but what do you mean natural abilities? What were you born with? You were not born with anything. Do you know that it's by 6 months, the only two responses or reflexes that a newborn has is which ones? एक ऊपर से गिरने वाला मोरोज, है ना? बस उसके अलावा बाकी सब आप सीख रहे हो, सीख रहे हो, लेकिन आप सीखना चाहते हो कि नहीं इज द की, राइट? हु इज बोर्न अ सर्जन बेटा जी? नोबडी इज बोर्न अ सर्जन, कोई कोई राइट? भी ऐसा नहीं होता जो पैदा होते ही कार्डियक थोरेसिक सर्जन बन गया हो। ऐसा नहीं होता। यू लर्न द आर्ट, है ना? यू यस, लर्न द आर्ट, okay? ठीक है, तो And हम also, सब सीखने I'm के sure लिए ही बड़े हो रहे हैं। today's agenda is just to you know little bit reduce your anxieties by talking it out। आप बात कर रहे हो, हम बात करें, it is like we'll just let the let the air off, थोड़ा थोड़ा सा घबराहट कम हो, और हम यस, कोशिश ये करते हैं कि वी विल बी विद यू पोस्ट द रिजल्ट। सो डोंट पैनिक कि सर मैं डिसाइड कैसे करूंगा, कैसे नहीं कर पाऊंगा। हम हैं वहां पे, हम फिर से बात करेंगे। we'll have a good talk on the career opportunities, we will have a physical event also,
and we'll try to have multiple digital events as well. We'll try our best कि बॉस कि एक बार तेरी बात सुन ली जाए, है ना, लेकिन तुझे बोलना तो पड़ेगा। ये मत करना कि आई एम हाइडिंग बिहाइंड पीपल कि सर लोग ये कह रहे हैं, मम्मी ये कह रही है, पापा ये कह रहे हैं, चाचा ये कह रहे हैं, मेरे अंकल हैं डॉक्टर वो ये कह रहे हैं। तू क्या कह रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तू क्या कह रहा है ये सोच। डोंट हाइड बिहाइंड पीपल। व्हेनेवर वी से दिस ना, वी जस्ट पोज, यू पुटिंग आवर वर्ड्स इनटू अदर पीपल माउथ एंड प्लेइंग देम बैक टू अस। कोई कुछ नहीं कह रहा है यार, कोई कुछ नहीं कह रहा। तू क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है। सोच दोबारा से, थिंक अबाउट इट। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर डिसीजन मेकिंग इन योर लाइफ। कोई कुछ नहीं कह रहा, किसी को कोई नहीं पड़ी है। तेरी जिंदगी है, तेरी शर्तें हैं, तेरी टर्म्स हैं। मेक अ गुड डिसीजन। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और वो जैसे ही मैं बोलती हूँ इंपॉर्टेंट बात है, मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ कि सबको ना पता लग जाए, बट सबके लिए है। रिजल्ट इज अ मैटर ऑफ 2 और 3 days। अच्छा बुरा जैसे भी 2 से 3 दिन की बात होती है, उसके बाद किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो stop getting bothered by other people. You need to understand that whatever it is, I am the one whom this is affecting. I have to take decisions what are going to be best for me. Okay? Yes, we will listen to everybody, but we will not let them affect our decision unless they are in our inner circle. आप समझ रहे हो? आप सुन सबकी सकते हो, मगर अगर आप चाहते हो कि आप कुछ लोग हों जिनकी आप बात सुन के अपने डिसीजंस को मॉडिफाई भी करो, तो वो कुछ ही होने चाहिए। वो लोग होने चाहिए जो आपके इनर सर्कल में हैं, जो सच में आपका भला चाहते हैं, जिनको आपकी हैप्पीनेस इम्पोर्टेंट है, आपका सक्सेस इम्पोर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर सुमीर, आप क्या बताओगे? एंड आई सी वन बच्चा इज सेइंग कि सर आज जो मैंने डिसीजन लिया कहीं वो लॉन्ग टर्म में गलत ना सिद्ध हो जाए। सो आई जस्ट टेल यू वन थिंग इज आई हैव मेड ऑल माय डिसीजंस इन माय लाइफ इन द स्पर ऑफ अ मोमेंट। वो बोलो या आज तो जी लें, कल की किसने सोची है। तो ये मत सोच के यार 25 साल बाद क्या होगा, 25 साल बाद जो होगा देखेंगे, होंगे वहां पे तो देखेंगे, नहीं होंगे तो छोड़ यार। आज के लिए ठीक डिसीजन लेंगे भाई। तुझे क्या ठीक लग रहा है, मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ना बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर देते हैं डिसीजन को। मैं Decisions are made by your gut feeling. Your heart already knows एंड what you want. for once, I agree 101% with Dr. Somay. Normally it's Oh my God. 99%. But today I agree 101%. Uh, I am not very old to comment on this, but this is what I have seen so far. If I compare two people, okay, one who has always taken a decision in the spur of the moment, and two, who someone who's thought about it a lot. Usually, people who take decisions on gut instincts are more likely to say yes to multiple things. So even if they fail in four, they will be successful in six. So those were 10 gut instinct decisions. Compare this with someone else who was very, very, soch vichar, asking here, there, everything. Out of 10 opportunities, he just took two and okay, was successful in both. But the success was only twice. Yes, just because there was a lot of overthinking. On the other hand, someone who was more aggressive, was taking decisions on gut instincts, they're likely to take more opportunities their way, to say more yes, and eventually the number of successes, right, that they hit tend to be more. So don't worry, don't overthink. You all know what overthinking does, right? We have seen that in the exam. Hai ki nahi? And we will end today's session by wishing you all the best for the results whenever they come. We wanted to make sure that we reach out to you before the results and tell you that boss it is okay. कोई बात नहीं। ऐसा लग रहा होता है कि बहुत बड़ा डिसीजन है, जिंदगी हिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। It is all about how you decide after that, how you make the best out of the outcomes that come your way, and every outcome is a victory. ऐसा मत सोचो, and your self worth is not connected to the outcomes. तो थोड़ा सा सोच के चलेंगे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू वेल। वी विश यू ऑल द बेस्ट। This year, as DAMS, as an academy, we want to do something different.
we have seen over the years that people in the test prep segment, although we don't call ourselves test prep, we believe that we are medical education, core medical education, लेकिन लोग बोलते test prep है. We have seen in the test prep people only celebrate the top 1 2 3 5 6. इस साल मैं मेरे हर बच्चे को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ. तो आफ्टर द रिजल्ट्स, after the initial buzz of toppers and everything is done, I will, and me and Dr. Deepti Yes. will open a full day where we will talk to each one of you, whosoever wants to talk to us and tell your story, and we Okay. will share But your story on social media. But now you all have to understand this. We will definitely be giving a day to people who have done well. Okay? They do need to be applauded. There is no doubt about that. Right? So don't feel that you are being neglected or anyone else is being neglected for that matter just because they were not a single or a double digit rank holder. No. It is not like that. It is like we want to spend a little time with them and then tell them, look, we did your best, we did our best with you, now we need to go to the other students as well, right? So we will give that share, we will applaud the ones who need to be applauded, we will be with the ones who need to, who we need to be there with, we will be with the ones who need a little pat on the back and tell them, चल यार कोई नहीं, हम हैं, देखा देखा जाएगा, right? So as I said, for us it's really difficult because आपका रिजल्ट एक बार आता है, हमारा बार बार आता है. हर बच्चे के साथ एक अलग हैप्पीनेस है या अलग उनके साथ एक अटैचमेंट है या उनकी जर्नी की एक प्रॉब्लम है. सो as much as possible we will be there, as much as possible we will be there for everyone, and you're free to reach out to us, right? It's just that you need to know that you are all individuals, you're all important, no matter what. Okay? So we wish you all the best. Have a productive day ahead, and we pray to the God that you get the branch of your choice in the place of your choice. जो तू चाहता है तुझे मिल जाए, इस यही हमारी दुआ है. We wish you all the best, बेटा. God bless you. Keep reminding yourself, अपना टाइम ऐसे नहीं आएगा, अपना टाइम जैसे हो अपन खुद लाएगा. Absolutely. Wish you all the best for your results. May you all come out with flying colors. May you be happy, content, satisfied, and I'm definitely going to pray on everyone's behalf that God be kind and we all do well. Okay? So take care, and you've done your bit. Just leave it now. Okay? It will be good. सब अच्छा होगा. ठीक है? Bye हमें everyone. नहीं पता बेटा कब आएगा रिजल्ट, हम भी आप ही की तरह वेट कर रहे हैं एंशियसली. ठीक है?